Hope my voice and the screen, hope my voice is audible and the screen is visible to everyone. If not, then please remind me between the lectures because sometimes there will be a network issue or something. So proceeding with the lectures, as yesterday lecture, we saw that uh, the Cauchy's integral formula and Cauchy's formula, that is whenever the points will be inside the circle or outside the circle, or when z1 and z2 both lies in inside the circle or in the contour integral. Now similarly we have a one more chapters is left in our first module, that is a residue. Residue is also belongs to Yeah, the same concept chapter, which belongs to your Cauchy's formula, because in this chapter you will see again that is a Cauchy's formulas, which is known as a Cauchy's residue formula, etc., etc. So before I have to proceeding this lecture, I have to explain few things. As in a last lecture, we saw that like a function z plus 4 upon something like z cube minus 1 or something, etc., etc. और such a kind of equation we saw. हम लोग ने जो वर्क किया था मैक्सिमम डिनोमिनेटर को ही कंसेप्ट यूज करके पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे. पॉइंट्स फाइंड आउट करके फिर हमने देखा था वेदर दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल. If I'm not wrong, you agree with this concept. We always saw that is denominator for calculation or calculating the points, which with the points lies inside the circle or outside the circle. Similarly here, residues, we have to find the residues. So the first question is, what is a residue? Residue होता क्या है? So as in a first or in a Taylor's and Lawrence series, I clearly explained that is a region of convergence. What is a region of convergence? So in that case, if you remember, that is a region of convergence, there is a circular concept lies inside the circle, circles lies outside the circle. There are three concepts in region of convergence. So similarly, residue is nothing but we can say that is region of convergence. Whenever or the application of residue is basically region of convergence. So before this, I have to explain few more things, that is singular points, because you should aware about that is what is a singular points. So when I say that is if a function f of z is analytic, when I say analytic means you should remember that is a function must be differentiable or a function must be derivative function. So when I say f of z is analytic, analytic at every point in the neighborhood of point z0 except z0 itself, then z0, or we can say that is f is analytic at everywhere except or at every point on the neighborhood except z0. तो z0 जैसे एक point हम लोग को मिल गया z0, so this point is called as a singularity point or singular points of your f of z. मतलब f of z analytic है where all neighborhood points except z0, so that we can say that z0 is your singular point, because at this point this function is not analytic, so this is known as a singular point. And moving ahead, these are the simple concept of definition of mathematics. These are not going to ask in examination, but you should aware these things for a calculation of a residue and all. Now I'm coming to the poles. What are the poles in a residue? So the poles are always important. When I say residue, first of all, I'm going to define that is a residue. So if z is equal to z0, जो point होता है,
is an is an isolated singularity. Singularity, then the constant b1, that is the coefficient of 1 upon z minus z0 in the Lorentz expansion or in the Lorentz series is called residue of f of z, is called residue of f of z at z equal to 0. Means basically जैसे मैंने starting में आपको बताया, we always look at denominator. Our calculation of a residue is our denominator, but there is a one thing is called as a pole. अब यहाँ पे कैसा रहता है, pole calculate करना रहता है, या we can say that is a calculation. So always remember, whenever we are doing like z minus z0 is equal to 0, तो इसका मतलब है ये simple pole है. This means it is a simple pole. या इसका पावर कितना है, 1 है. So that's why we can say that it is a simple pole. But when I say z minus z0 raised to power m or n, then we can say that this is not a simple pole. This is not a simple pole. This is a pole with order m. किस पोल का ऑर्डर m? ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रीवियसली कॉची इस इंटीग्रल में सॉल्व किया है. So according to that, you can see that when z minus z0 is equal to 0, then we can say that is this is a simple pole, and when z minus z0 raised to power m is there, then it is known as pole with order m. So this is two types of residue. जब रेसिड्यू कैलकुलेट करोगे आप तो सिंपल पोल पे कैलकुलेट करोगे, पोल विथ ऑर्डर एम भी कैलकुलेट करोगे. एक तीसरा और है, दैट इज इफ z माइनस z इक्वल टू, ये तो वैसे ही होगा, z इक्वल टू z0, सिंपल पोल रहेगा. z माइनस z0 is a simple pole, but the thing is what, z0 is a simple pole, but this form will be like pz upon qz, pz upon qz. ये फॉर्मेट आपको मिल सकता है. So what I explain again, I'm repeating these things. Residue means सिंगुलरिटी पे आ जाता है, या आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या सिंगुलरिटी क्या किसको कहते हो आप, जो आपका z0 पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज योर सिंगुलरिटी. रेसिड्यू आप किस तरह कैलकुलेट करते हो? रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लगता है? रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको लगता है दैट इज 1 upon or coefficient of your function, like 1 upon or something, because you have to utilize your denominator for calculation of poles. And what is poles? Pole means what? The equation z minus z0 is equal to 0. We can say that it is a pole equation. Poles कितने type हैं? That is pole having a 3 types. The first one is a simple pole. This is first one. Second one is a simple pole, but the order will be like, or simple pole, but the type will be like pz upon qz, and the last one will becomes pole with order f. So there are 3 types of poles, and according to that 3 type of poles, you have to calculate residue. So hope these things are clear to everyone, what is a residue and all. Now I am proceeding the formulas. अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. आई एम वेटिंग फॉर 1 minute. Please go ahead straight away. If no doubts, I am proceeding, because this is just a definition I explain. ये चीज आपको
कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में कि रेसिड्यू क्या है, डिफाइन रेसिड्यू, डिफाइन सिंगुलरिटी, डिफाइन पोल और समथिंग। बट क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि पोल बोला है तो पोल ही कैलकुलेट करूं, या सिंपल पोल है तो सिंपल पोल क्यों है, ये तो हमें पता होना चाहिए। So that's why I explain these things. Now I'm proceeding with the formulas. So calculation of residues at poles. Calculation of residue at poles. So as I mentioned, there are three types of poles. You will see the first one. The first one, if z equal to z0, if z equal to z0 is a simple pole of f of z, then formula is residue of f of z at z equal to z0 is equal to limit z approaches to z0, z minus z0 into f of z. So this is a formula when the simple pole is having a simple pole. It's the second one. Second one, if f of z, or if z equal to z0 is a simple pole. Is a simple pole. Simple pole, but what? That is, as I mentioned, that is of f of z equal to, यहाँ पे सिर्फ f of z है, of f of z equal to, will mention p of z upon q of z, like this format. Then what we have to write, that is a residue of f of z, residue of f of z at z equal to z0, that is a limit z approaches to 0, means z0, pz upon q dash z. Now third one and the last one, if z equal to z0 is a pole with order m, is a pole with order m, now order is having m, then residue of f of z at z equal to z0 is equal to 1 upon m minus 1 factorial limit z approaches to z0 d raised to
m minus 1 upon dz raised to m minus 1 z minus z0 raised to power m upon f of z. So these are the three formulas. According to these three formulas, we will calculate the residue of whatever the function will be given. माइंड में अच्छी तरह से फिक्स रखो, बिकॉज इसमें दो ही टॉपिक है, एक कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू है एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इज योर दैट इज कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम. एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू जो था पहले इस सिलेबस में है, वो अब सेल्फ स्टडी है, वो पार्ट आपको एग्जाम में नहीं आएगा, पेपर में आपको नहीं आएगा. ओनली दिस टू टॉपिक्स वी हैव टू कवर. वेरी सिंपल. might be will we will finish this module or this chapter in this week by Thursday or Saturday. So please remember these three formulas. Z0 is a simple pole. One is f of z, and the second one is pz by qz format. And the next one is order m, and then 1 upon m minus 1 factorial. Limit z approaches to z0, dou raised to m minus 1 upon dou z raised to m minus 1, z minus 0 raised to m into f of z. So just go through with this part in 1 minute, then we'll start the problems. Okay, so we have to solve problems based on this part. So I'm just taking one example. Find the residue of sine pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 into z minus 2 the whole square. Z minus 2 the whole square. Now see, this is our function is given. Now you can just observe that is f of z. F of z, if you observe this part, so this is a simple pole, and if you see z minus 2, then this pole with order m means here order is 2. So according to that, we have to solve one by one. So one by one we have to solve solution of this part. What will be solution? F of z has
simple pole f of z has a simple pole at z equal to 1. z minus 1 है उसमें अगर देखोगे तो you will see that is a z minus 1. So z minus 1 equal to 0, therefore z equal to 1, and a pole and a pole with order or of order 2 at z equal to 2. You can just see that is, as I explained in the formula early above, that is f of z has a simple pole at z equal to 1 because of this term, and a pole of order 2 at z equal to 2. So we have to solve one by one terms or concept. So if you see in the first factor or first formula, that is, if z of z is, if z equal to z0 is a simple pole of f of z, then calculation of a residue of f of z at z equal to z0 will be limit z approaches to z0, z minus 1 into f of z. So we have to solve according to that. So I'm just solving for point first, residue of f of z at z approaches to z0 था, but here z0 is what, 1. z minus z0 था, तो z minus 1 है, into f of z है, तो f of z पूरा ये फंक्शन, so it will become sine of pi z square of pi z square सर फिर लैग हो upon रही है। z minus 1 into z minus 2 into z minus 2 raised to power 2 times. So we have to sort out this part. So these two parts get cancelled. हमेशा याद रखो जिस पे पॉइंट पे होगा, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया है कि those points which lies inside the circle they will cancel. वो पार्ट नहीं रहेगा वहां पे. सेम चीज यहाँ पे भी है, कोई अलग नहीं है. वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला में अगर कंपैरिजन करोगे सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है. वहां पे 2 पाई आई इंटू, क्योंकि वो कॉचीज है, यहाँ पे रेसिड्यू है, ये भी आगे कॉचीज जब अप्लाई पाया है आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा. सो z माइनस 1 z वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 1 रखना है आपको. सो substituting z equal to 1 here, so you will getting what, you will getting limit z approaches to 1, तो z का वैल्यू 1 रखोगे, I can write here that is z equal to 1. So you will getting that is sine of pi plus cos of pi, and 1 minus 2 will becomes minus 1, and minus 1 का स्क्वायर अगर समझने के लिए आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 1 minus 2 raised to power 2 times. At the end sin pi is 0. आप अपने कैलकुलेटर में पुट कर दो वैल्यू, सबसे सिंपल अगर याद नहीं है आपको तो. And cos pi is minus 1. So at the end you will getting that is a minus 1, और ये आपको रिजल्ट मिलता है. So this is a residue at z equal to 1. अब नेक्स्ट पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं. सो रेसिड्यू of f of z, residue of f of z at z equal to 2, at z equal to 2
अब z इक्वल टू 2 पे ऑर्डर क्या था, इफ यू रिमेंबर देन इट इज ऑर्डर 2. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई एम जस्ट राइटिंग हियर फॉर्मूला 1 अपॉन फर्स्ट m minus 1 factorial 1 upon m minus 1 factorial limit z approaches to z0 d m minus 1 upon dz m minus 1 z minus z0 into f of z. तो ये पार्ट हमको लिखना है यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सॉर्ट आउट. तो यहाँ पे m आप देखोगे तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज 2, सो 2 यहाँ पे रख दोगे आप, and we have to sort of 2 minus 1 will becomes 1, so 1 factorial is 1, so this will treat it as a 1 only. यहाँ पे लिख देता हूँ m equal to 2 and z equal to 2 है, तो 2 भी यहाँ पे z0 is equal to your, I am just writing z0 is equal to 2, so substitute z0, so limit z approaches to 2, so d by dz z minus z0 is what, so z minus 2 हो जाएगा आपका, और रेज टू पावर m है तो m as it is, so m is what 2, z minus z0, so z minus 2 raised to power 2 into f of z. F of z is what, sine of pi z plus cos of pi z square upon z minus 1 z minus 2 raised to power 2 times. So this part get cancelled. We have to perform the derivative. So please remember this thing. यहाँ पे जब तक derivative नहीं हो जाता तब तक आप z equal to 2 नहीं रख सकते हो. प्रीवियस में जैसे कैंसलेशन हुए थे सीधा टर्म्स के आप डेरिवेटिव रख दिए थे. So similarly we have to form here, that is d by dz or limit z approaches to 2 डेरिवेटिव. सो u by v रूल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली. u by v रूल क्या है, इफ यू रिमेंबर then v into, so z minus 1 into derivative of this part with respect to z. तो sin pi z square का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको 2 आ जाएगा सबसे पहले और sin pi z आ जाएगा, sin pi z, और फिर इसका डेरिवेटिव निकालोगे आप तो यू विल गेटिंग pi, so you will getting sin pi z square, sorry, just a minute, yes, so z minus 1, okay, हाँ right. So we should apply here, that is this will becomes cos pi z square in z, क्योंकि देखो साइन विल बिकम्स cos pi z square और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो z square का 2z आएगा और pi मल्टीप्लाई में तो kept as it is प्लस cos pi z square का you will getting minus sin of pi z square into 2 pi z. आपको हो गया है पार्ट. देखो v as it is रख दिया है पूरे u का डेरिवेटिव, फिर प्लस u as it is अभी रख देते हैं और माइनस, प्लस नहीं होता है माइनस होता है, so we have to put minus sin of pi z square plus cos of pi z square, z का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव लोगे तो -1 का 0 और इधर 1 ही आएगा, so we have to kept as it is 1. ये पार्ट हो गया आपका अपॉन
v square upon v square means z minus 1 raised to power 2 times. So hope this step is clear. What we did here, that is, or what I applied, v into derivative of u plus, or v into derivative of u minus u as it is into derivative of v divided by v square. And at the end, we have to simplify this part. So after just simplification, you can see that is sin pi z square, or we should substitute the value of z equal to 2. अगर z equal to 2 रखना है, so we can substitute directly here क्योंकि derivative हो गया है. If you remember, in a lecture I clearly state that for in the same 3 for diploma students and for regular students, cos 2 pi n जो होता था वो 1 होता था, और sin 2 pi n जो होता है हमारा वो 0 हो जाता है. So while substituting z equal to 2, what we will get? See, 2 minus 1, you will getting 1. इस ब्रैकेट में आते हैं, 2 रखोगा तो क्या होएगा? cos 4 pi. cos 4 pi क्या हो जाता है आपका? प्लस 1. यहाँ पे z equal to 2 रखोगे, so you will getting something 4 pi. 4 pi into 1, you will getting 4 pi. Next, sin 4 pi. Sin 4 pi is 0 because sin 2 pi n is 0. कुछ भी वैल्यू रखोगे n का तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा. So at the end you will get 0. और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो अपने कैलसी में रख के क्लियर फाइंड आउट करो. You will get the result properly. So sin 4 pi is 0. 0 into anything will become 0. So this part is I'm writing as a minus 0. ये part हो गया. Then minus, यहाँ पे रखूंगा 2, तो 2 रखूंगा तो sin this part is again 0. So 0. Cos 4 pi, cos of 4 pi is 1, so I'm just writing here as a plus 1 divided by. So 1 का square 1 ही होता है, तो लिखना है तो लिखो, फर्क नहीं आता उससे. तो at the end you can simplify this part. 4 pi into 1, 4 pi, and this is minus, so finally result will be becomes 4 pi minus 1, and this is our final result. So hope this things is clear to everyone how we tackle the problem. एक बार check करो. Sir, नहीं समझा है तो you should ask a doubt. Sir, can you please repeat from residue of f of z? Sir, So I'm considering no doubts from this. Or if you are facing any doubts, you can on. So your screen is freezing. Now see, hope if I off the camera, then it might be working or something. Just see the problems and let me know whether you will understood or not. Okay, I will explain again. Okay, now see. Once again, I'm just explaining this thing because see, ये concept है. Problem में functions कुछ भी हो सकता है, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता. The question is what? Find the residue of sin pi z square plus cos pi. सीधा नजर डिनोमिनेटर, बाकी कहीं पे फंक्शन कुछ भी आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता. डिनोमिनेटर में देखोगे, one bracket is z minus 1, second bracket is z minus 2 the whole square,
So according to that, whatever I explain, if a bracket having a power, then it is a pole with order m. If bracket is a power only one, then we can say it is a simple pole. So you can see that is z minus 1 is a simple pole, or z equal to 1 is a pole of simple or simple pole, and z equal to 2 is a pole with order 2. So दोनों पे रेसिड्यूज सेपरेटली फाइंड आउट होगा. द फर्स्ट इज रेसिड्यू ऑफ f of z at z equal to 1. We apply the formula limit z approaches to z0, z minus z0 into f of z, first formula. And then we just cancel this term. जैसे ही cancel हुआ, यहाँ पे derivative तो है नहीं, so we just putting the value of z equal to 1, and at by putting the value of z equal to 1, we got sin pi and cos pi. So according to trigonometric, sin pi is 0 and cos pi is minus 1. So minus 1 upon anything is minus 1 upon 1 is minus 1. Similarly, the second part is of f of z at z equal to 2. What z equal to 2? At z equal to 2, at the pole with order m. M means how much? That is 2. यहाँ पे order कितना है? 2 है. फॉर्मूला मैंने जानबूझ के लिखा है. फॉर्मूला यहाँ पे सामने लिखा है, m का वैल्यू सिर्फ 2 पुट किया है और z0 की जगह पे 2 रख दिया है. एंड जस्ट वी सिंप्लीफाई द टर्म्स. तो z minus 2 the whole square, z minus 2 the whole square get cancel. हमको ये दोनों टर्म्स मिल रहे हैं. ये दोनों टर्म्स में हम अप्लाई करते हैं u by v डेरिवेटिव रूल. So according to that rule, you can just observe that v into derivative of u, v into v as it is into derivative of u, तो साइन का डेरिवेटिव cos pi z square into pi z square का डेरिवेटिव 2 pi z प्लस cos pi z square का cos का डेरिवेटिव माइनस होता है तो माइनस साइन pi z square into 2 pi z, देन माइनस साइन, फिर u का पूरा टर्म्स एज इट इज लिखा है एंड डेरिवेटिव ऑफ v. तो v का डेरिवेटिव माइनस 1 डेरिवेटिव विल बिकम 0 एंड z डेरिवेटिव विल बिकम्स 1 अपॉन z minus 1 the whole square, because v square होता है. तो we just applied that is a v square, and later we just putting the value of z equal to 2. z equal to 2 पुट करोगे तो 2 minus 1, then cos 4 pi हो जाएगा. यहाँ पे 4 pi आपको मिलेगा. दिस इज sin 4 pi. So sin 2 pi n is 0, cos 2 pi n is 1. So according to the value, and we simplify it, and 4 pi minus 1. So this is our result. Now next problem. Find the sum of the residue at singular point. Points of f of z equal to z upon z minus 1 the whole square, z square minus 1. So now you see that that is this part. So this is a square minus b square वाला concept है यहाँ पे. You can see that we can separate this part very easily. मैं थोड़ा सा यहाँ पे separate करता हूँ इस part को, otherwise solution में दिक्कत होता है. So f of z is equal to z upon z minus 1 the whole square as it is into a square minus b square. So a minus b means z minus 1 or a plus b means z plus 1.
therefore f of z is equal to z upon z minus 1 raised to power 3 into z minus 1 हमको मिल गया. So this is our result. Now you can see that is दोनों में देखोगे तो एक सिंपल पोल है +1 कि -1 वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होकर क्यूब हो गया और +1 as it is. So a minus b into a plus b becomes a square minus b square. Now we have to see that is this is a simple pole and pole with order m. So f of z is, or instead of this I'm just writing directly. अब आपके सामने ये पोल विथ ऑर्डर m है, ये पोल विथ सिंपल पोल है. Z equal to 1 is a pole of order 3. And Z equal to -1 is a simple pole. So very easy question. One by one we're calculating. First I'm calculating the order wala residue of f of z at z equal to 1 is equal to, डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो 1 upon m minus 1. m is how much? 3. So 3 minus 1 that is 2 factorial. Limit z approaches to क्या है था 1 क्योंकि वैल्यू कितना है 1. d स्क्वायर m minus 1 था तो d स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर. फिर यहाँ पे टर्म था z minus 1 z minus z0 रेज टू पावर क्या होता था m होता था z minus 1 रेज टू पावर 3 इंटू एफ ऑफ z. तो z अपॉन z minus 1 रेज टू पावर इंटू z प्लस 1. तो ये पार्ट कैंसल करना है फंक्शंस का. 1/2 फैक्टोरियल मीन्स 1/2. लिमिट z approaches to 1. फिर से u by v रूल अप्लाई करेंगे. दिस इज अ u एंड दिस इज v. तो फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं तो ये कम हो जाएगा, d by dz हो जाएगा d by dz और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v as it is z plus 1 into derivative of z with respect to z will be 1 minus z as it is and derivative of z plus 1 will becomes 1. 1 as it is divided by z plus 1 square. ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया. Then 1/2 limit z approaches to 1 d by dz. सिंप्लीफाई करके लिख दो या डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो. z plus 1 minus z upon z plus 1 the whole square. सिंप्लीफाई कर दोगे इस पार्ट को तो आपको क्या मिलेगा देखो. और आई एम राइटिंग हियर ओनली 1/2 लिमिट z approaches to 1 d by dz upon 1 upon z plus 1 the whole square. और ये पार्ट आपका 0 हो जाए मतलब कैंसिल हो जाएगा. दिस पार्ट गेट कैंसिल. अब नेक्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर दो तो you will getting 1/2 limit z approaches to 1. जैसे नेक्स्ट डेरिवेटिव आप you will apply, you will getting what u by v ही करो. अगर नहीं याद है तो u by v अप्लाई करने का. z plus 1 the whole square. डेरिवेटिव ऑफ 1 with respect to z 0 हो जाएगा minus 1 as it is and derivative of this part तो 2 पहले आगे आ जाएगा. मैं लिखता हूँ 2 into z plus 1 और into derivative of z is 1.
टू आगे आ जाएगा तो n माइनस वन हो जाएगा, तो टू माइनस वन वन हो गया एज इट इज। फिर के अंदर जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव, अगर z स्क्वायर रहता तो 2z यहाँ पे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, सो z प्लस वन रेज टू पावर 4 टाइम्स। अब क्या है, कैंसलेशन करना है, कैंसलेशन कर दो, तो 1/2 लिमिट, एक स्टेप और लिख रहा हूँ, z अप्रोचेस टू 1। आप अगर अच्छी तरह से देखोगे तो ये तो जीरो है, ये z प्लस वन कैंसिल होगा इस पावर से, तो आपको मिलेगा यहाँ पे -2 अपॉन z प्लस वन रेज टू पावर 3 टाइम्स। अब यहाँ पे सिर्फ लास्ट में आपको रखना है z इक्वल टू 1, so we have to put z equal to 1, therefore you will getting 1/2 into -2 upon 1 plus 1 2, and it will becomes 8. The 2 get cancelled, at the end you will getting -1/8, -1/8। नेक्स्ट आप अगर देखोगे अच्छी तरह से तो ये तो फर्स्ट के लिए हो गया जिसका ऑर्डर थी, नाउ z इक्वल टू -1 जो है वो सिंपल पोल है, सो रेसिड्यू of f of z at z इक्वल टू -1, वो सिंपल पोल था। सिंपल पोल के लिए कोई अलग ऐसा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट z अप्रोचेस टू -1, यहाँ पे ब्रैकेट में ये टर्म z प्लस वन, जो टर्म है z प्लस वन इंटू एफ ऑफ z, एफ ऑफ z आपने क्या लिखा है z अपॉन z माइनस z प्लस वन और z माइनस वन रेस टू पावर 3 टाइम्स, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आगे पीछे लिख सकते हो इसको इधर इधर, और z का वैल्यू सीधा -1 रख दोगे, z इक्वल टू -1, तो एट द एंड यू विल गेटिंग व्हाट -1 अपॉन -1 will become -2, और -2 का क्यूब करोगे तो you will getting -8, and at the end you will getting 1/8। तो इसको मैं R1 में दे दिया, इसको R2 से रिप्रेजेंट कर दिया, फर्स्ट रेसिड्यू सेकंड रेसिड्यू। तो R1 R2 वी हैव, हमको यहाँ पे क्या बोला था, फाइंड द सम ऑफ द रेसिड्यूज, तो यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ द रेसिड्यू, दोनों को एडिशन करना है, रेसिड्यू इज इक्वल टू R1 प्लस R2, therefore R1 is what, -1/8 plus 1/8, and you will getting 0, you will getting 0, so this is our problem. Now just wait, I'm just sharing the attendance link. Z minus 1 का डेरिवेटिव ओनली 1 होगा, -1 कैसे होगा, हाउ यू विल राइट -1, -1 का डेरिवेटिव थोड़ी ले रहे हो आप, z का डेरिवेटिव ले रहे हो, so please remember that is we are taking the derivative of variable, not constant, yeah, please remember these things. So I'm just sharing the attendance sheet, just wait for 2 minutes. Just fill this form.
I hope the problem is clear to everyone. If anyone having any doubts, you can just on your mic and you can ask, so I will explain. If no doubts, just fill the attendance and we should stop the lecture. सर लिंक भेजो ना वापस एक बार। Thank you, sir. So hope things are clear. Thank you. Now you should do the lecture.